Hey, so let's see what I mentioned yesterday in post market. Basically, was expecting a gap up to short, and I had mentioned those levels, but it did not gap up. It opened flat, and did not really have a plan for it. So did not do anything in terms of positional or post market analysis. Looking at structures, volume structures, I did take a trade in the morning uh, based on volume structures, which I've been explaining in mostly all my videos. I don't really like Bank Nifty. I don't really like Nifty volume structures, but Nifty had a better risk reward than Bank Nifty, so took Nifty. What was the trade? Basically, look at this. There's an up move and there's a down move, right? Which breaks the up move's candle's low. So I've mentioned in a lot of videos where I've mentioned that if this is not broken, don't short, right? And when this gets broken with good volumes, the volumes are really good. The problem is this was also broken, so this could have gone anywhere. It could have gone up, down, sideways. So the only way to find out where it goes is take a trade. So I took a trade once it came back and closed under this box. Stop loss was day high. Target I trailed my stop loss. This stunt where this candle basically uh, breaking of this high took my trail stop loss. And yep, so Bank Nifty also did this stunt. Both of these did not break day high, which becomes your stop loss in such scenarios. Bank Nifty was sideways, Nifty was also sideways. So here made I could have made more, but yeah, trail stop loss is always the case where you want more, so that's fine. Coming to Nifty, I usually give a trade on my channel. So today's was, if 115 low breaks, I'm looking for a sell. This was the reference, was a scalp sell because I knew it will probably come back if it falls. So it did not happen. It did trigger, but my stop loss got hit. So gave some of my profits which I made in the morning. Okay day, not a very good day because I probably could have exited somewhere here. Anyways, happens. And this was also a really boring kind of a. So I wouldn't really say this is sideways where the range is basically very big, almost 100-point range. So yeah. Now what am I expecting tomorrow? I want this to basically gap down, break this 17,000 in spot, today's low basically, and then I look for buying opportunities. If it gap ups, I'll wait for a 1 hour candle to close and then see what can I still want this I still want this to come around these levels to probably look for a shorting opportunity, or maybe even fill this gap which is still left. But I don't still see an up move, kind of a bullish zone, though even though we have very good volumes of buying volumes below 17,000, which were formed when we did that 17 to 19k move. So but I don't see any volumes being created right now, good volumes being created right now when the fall is coming. So I don't really see this has the low, today's low or upcoming low. That is the reason I want this to cap down. And if it caps down with good volumes and people come and defend it, smart money comes and defends it, then I'll be interested in buying for long term. But for short term, probably a 200-300 point range. If it caps down, I'll buy a 0 call. We have 2 weeks to March end, so yeah. So that is the plan for tomorrow. If it caps down, I'll probably buy a 0 call, and then we'll wait. If it doesn't gap down, I'll see how 1 hour candle reacts and then decide what to do. Wouldn't want to buy. I would want this to break first and then look for buying opportunities. थैंक यू. बैंक निफ्टी कल के पोस्ट मार्केट में देखते हैं क्या हुआ. मैंने बोला था कि कैप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कैप अप होगा ताकि मैं शॉर्ट कर सकूँ अच्छे लेवल्स पे. ये मेरे लेवल से 450 स्पॉट पर ऐसा नहीं हुआ. और अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही वॉल्यूम स्ट्रक्चर से बहुत ही ख़राब थे. क्योंकि अप मूव आया उसका लो टूटा, फिर उस डाउन मूव आया उसका भी हाई टूटा. तो ऐसे स्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है.
को बहुत मतलब कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसको सिर्फ एक ही तरीका पता करने का, एक से अच्छा सितारा लेके और स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड करिए। तो मेरा डायरेक्शन तो डाउनवर्ड्स था, क्योंकि बेसिकली मैं तो कितनी हर वीडियो में यही बोलता हूँ, अगर ये वॉल्यूम का लो टूट जाता है तो मैं तो शॉर्ट जा रहा हूँ हाई रख के स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस उड़ जाता है तो उड़ने दो। और यही किया मैंने। मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस ज़रूर उड़ गया ये स्टंट की वजह से, यहाँ पे जब ये वॉल्यूम बना 12 o'clock पे, तो उतना मैं बुक नहीं कर पाया जितना मुझे बुक करना था यहाँ पर। तो एक वो है दुख की बात है। और यहाँ पर जो मैंने दूसरा जो ट्रेड दिया था उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो मेरा ट्रेड ये था बेसिकली 115 का लो टूटता है तो स्टॉप लॉस रहेगा 1 o'clock का, ये रेफरेंस है 1 o'clock या 115 का हाई। और स्कैल्प रेट्स थे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये वापस आ जाएगा। तो बेसिकली वो एक रेंज में ही घूम रहा था, लेकिन वो रेंज में उसने लो तोड़ के स्टॉप लॉस भी उड़ा दिया, चलेगा। तो जितना मैं प्रॉफिट कमा सकता था उतना नहीं कमा पाया। तो ये हो गया डे ट्रेडिंग का। अब मैं मंडे का मेरा व्यू है, कल का मेरा व्यू है। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अभी जहाँ पे आज के फॉल में भी कोई वॉल्यूम्स नहीं आई है नीचे की तरफ डिफेंड करते हुए, पर 17,000 के नीचे 16,800 के आसपास शायद निफ्टी में बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है। तो वो तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, देखते हैं वो तोड़ता है कि नहीं ये। तो मैं चाहता हूँ कि ये कैप डाउन हो कल और फिर मैं एक 0-0 कॉल खरीदूँ निफ्टी में। और अगर ये कैप डाउन होता है तो पक्का 0-0 कॉल खरीदूँगा। मेरा टारगेट रहेगा, 2 टारगेट्स हैं जहाँ मैं शॉर्टिंग करने के लिए देखना चाहता हूँ। बेसिकली ये गैप फिल एक, ये तो पक्का जो मैंने कल वॉल्यूम्स जो लेवल्स बोले थे 17,450, तो यहाँ ये जोन पे तो पक्का आना चाहिए ये फिल करने के लिए। ये जोन बहुत बड़ा है 570 से 450, तो और यहाँ पर हम 17,000 के नीचे हैं, तो 400 पॉइंट्स का टारगेट हो सकता है 0-0 पे। तो मैं देखता हूँ अगर ये गैप डाउन होता है तो। अगर ये गैप डाउन नहीं होता है कल और 1 आवर कैंडल अगर एक अप मूव बना रहा है तो मैं सोचूंगा क्या करना है 1 आवर कैंडल के क्लोज होने के बाद। तब तक मैं डिसाइड करूँगा क्या करना है, वॉल्यूम स्ट्रक्चर कैसा बना है उसको देख के। और अभी के लिए तो और कुछ नहीं। थैंक यू।